Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे एंड मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं हिंदुस्तान के एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने इस साल तहलका मचा दिया। जी हां, 10 सितंबर को रिलीज हुई भूत पुलिस, जिसमें सैफ अली खान थे, अर्जुन कपूर, जैक्सन फर्नांडिस, यामी गौतम एंड टिप्स की ये फिल्म एंड डिज्नी हॉटस्टार में आई और छा गई। मतलब है बहुत ही कमाल था। इस समय मेरे साथ में मौजूद है पवन कृपलानी जी। पवन मेरे भाई, कैसे हो? I'm good, sir. Lovely to be on your show. Big पवन, fan. मतलब ये क्या रिलेशन है आपका यार भूतों से? इसकी पहली फिल्में जो बनाई आपने, क्या चाहते क्या हो आप? ये तो बचपन कैसा था आपका? No, my childhood was pretty normal, but it's just a fascination for supernatural. I think it's one of those stories that I think I started liking it since my grandmother would tell me stories to put me to sleep at night. It was like a little bedtime stories. So from there only, I've kind of got onto it, and I've been watching horror films since I was a kid. I used to sneak out and watch it, or I used to watch it without telling my parents when they would go to sleep. So strangely, I've enjoyed that genre. I think it's like fantasy. It's like escapism. There's a certain sense of enjoyment that I kind of like from it, and it's been, but nothing too serious in terms of. I'm not a disturbed person. I don't have a disturbed childhood. I'm a pretty normal person actually. But yeah, it's just the love for the genre, I think, more than anything else. तो बचपन में कौन से सबसे पहली आपने हॉरर फिल्म देखी थी जो आपके दिमाग में बसी हुई है आज भी? बचपन में मैंने एक I had seen एक एल्फ्रेड हिचकॉक की पिक्चर देखी थी मैंने. I saw this movie called Psycho. It was the first time मैंने एक थिएटर में I was in America, एक स्क्रीनिंग में मैं घुस गया था एक यूनिवर्सल स्टूडियोज में, और मैंने एक देखा था साइको, और that was the first time that I had experienced something. I was petrified of going into the shower after that for I think almost I didn't think I had a bath for almost a year after that movie. So I was petrified that I would be murdered in the shower. But I think from there that interest started. Then I started watching Jaws and all the other movies that came out in the 80s and 90s, and then in the Hindi movies I started my first experience with a good Hindi movie was Mahal. I really love Mahal, Madhumati, all of those movies back in the day were lovely. And then obviously Ramu came about, and then he made Bhoot, which I think all of us saw in the theater, and all of us had sleepless nights after that. So yeah, it's been a good journey. आपको क्या लगता है कि बहुत सारे इस समय जो शो देख रहे हैं पूरी दुनिया में कोने कोने देख रहे हैं, और कई लोग ना इंस्पायर हैं जो चाहते हैं कि वो फिल्में बनाएं, हैं बहुत इंस्पिरेशनल, खासकर भूत पुलिस की बात करें, फोबिया की बात करें, जो भी फिल्में बनाते हैं आप लोग इंस्पायर हो जाते हैं, यार ये तो मैं भी बना सकता हूँ। तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है ऐसी टाइप की फिल्म बनाने के लिए? I think like with any other genre, I think the most important thing is story. You have to have a strong story that you want to tell, something important you want to talk about. I think story is paramount. It's the first thing that you start with, and once you have a good story, then the genre is almost just the packaging of it. If you're making a horror film or a thriller film, then I think one of the best things to do is to watch as much in that space. But there've been so many great Diggaj filmmakers before us who've done movies in thrillers and genres. Study Alfred Hitchcock, study Kubrick, read so much such lovely fiction on ghost stories from England, from America, even from our own country. There's some lovely Marathi writers who write some good horror films, horror stories as well. So I think reading up, watching, learning the basic tool of suspense is very important. Understanding how you tell suspense, how you tell a thrill. I think there's a structure to it. Once you understand it, then it becomes easier to start using it. But I think most important is story. I think the story is paramount.
अच्छा, खासतौर से देखा जाए तो जितनी भी फिल्में होती हैं हॉरर की, उसमें थोड़ा सा हाँ सस्पेंस भी होता है। आपने कॉमेडी चुना, भूत पुलिस चुना आपने, जिसमें हाँ कॉमेडी हाँ। हॉरर, ये जोन कैसे चुना आपने? ये जोनर अपने आप में बहुत ही यूनिक है और बहुत ही टेक्निकली देखा जाए तो बहुत टफ हाँ भी है। अगर सामने लोग हंसी वो नहीं आए या तो बहुत टफ, बहुत ट्रिकी तो है ये, पूरा बहुत tricky है। या आपने सही बोला कि ये जॉनर बहुत ही टफ है कॉमेडी और हॉरर को मिलाने के लिए, क्योंकि ये बट द वन थिंग दे बोथ हैव इन कॉमन है कि दोनों एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एक जॉनर है हाँ, कि तुरंत हंसी आएगी, अगर तुरंत डराएगा। यस। हाँ या सो इफ यू कैन एंड एक्चुअली वो ही दो जॉनर है जो दैट कैन बी एक्चुअली मिक्स्ड वेरी वेल। सो भूत पुलिस लेके मैं तो 10 साल से आई बीन ट्राइंग टू मेक इट, 10 साल से आई बीन ट्राइंग टू मेक दिस मूवी। 2008 2009 में मैंने पहली बार लिखी थी स्क्रिप्ट। उस टाइम पे थोड़ा अजीब था फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि वो हॉरर कॉमेडी का स्पेस अब तक डिस्कवर नहीं हुआ था। स्त्री नहीं आई थी, ये नहीं आई थी, तो वो सब उसके वजह से people didn't really take to the genre. So it took me a while to finally make it after the success of some commercial horror comedies. But I think the horror and comedy go very well. क्योंकि because they both have instant gratification और और एक कॉमेडी जो मिक्स करता है हॉरर में, व्हाट हैपेंस इज उसको थोड़ा आप वो जो नीश ऑडियंस है ना, वो नीश ऑडियंस सडनली बिकम स्लाइटली बिगर. It becomes a more commercial genre because the comedy brings in the family, brings in, it suddenly opens up जो otherwise जो horror movie का genre है बहुत ही niche, बहुत ही kind of selective जो लोग हैं जो watch करते हैं, मगर horror जो comedy आता है तो becomes a full एक family entertainment एक so I think it's a good uh, space ये horror comedy especially आपने, for our country. जी जी, आपने कहा कि 10 साल पहले से कहानी आपके पास में थी, आप बनाना चाह रहे थे। हाँ तो ये हमारी इंडस्ट्री में देखिए हाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। टेक्निकली देखा जाए तो आपकी बैकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टार आपके साथ में होना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल. क्या क्या लगता है कि अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है हमारे हिंदुस्तान में? व्हाट डू यू थिंक? I think the हाँ कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है. I mean like right now 5 years ago अगर जब मुझे से फोबिया बनाना था, उसमें थोड़ा स्ट्रगल था क्योंकि एक थोड़ा नीच सब्जेक्ट था, एक हॉरर साइकोलॉजी के स्पेस में था. सो उस टाइम पे कोई बैकिंग नहीं मिला. जब राधिका आप्टे ऑन बोर्ड आई तब हम्म। बैकिंग मिला. तो वही ऐसा ही एक स्ट्रक्चर इधर अब तक भी वही चल रहा है कि आपको जब एक्टर आ जाए बोर्ड पर तब मिलता है फाइनेंस, तब मिलता है प्रोडक्ट, सब कुछ सो बिना एक्टर का अभी ये फॉर्मूला अब तक क्रैक नहीं हुआ है कि स्क्रिप्ट बढ़िया है तो इसके ऊपर बना देते थे, है ना. वैसा आई डोंट थिंक we've cracked that as yet. Like your script's amazing, so you can on based on that you'll get money. So I think it's usually you have a good script, but you need to get an actor to be attached to the script, and then only then do you get financing. I think, you know. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अगर भूत पुलिस की बात करूं तो ये फिल्म आई, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो हाँ इस फिल्म में सैफ अली खान, अर्जुन, ऐसे लोग आए, ये मतलब ये आसानी हाँ. से आ गए कि आपको थोड़ी मेहनत लगनी लगी थोड़ी सी? So सैफ और मेरा एक 2018 में मुझे एक विंडो मिला था कि सैफ से मिलने का. कोई 10-15 मिनट का एक विंडो था क्योंकि उस टाइम तक, क्योंकि अभी ना as I was saying earlier that I've been trying to make Bhoot Police for 10 years, and it's gone through many people, and so वो एक point था कि दौर था कि I was about to give up कि अब अच्छा, छोड़ दो, ये नहीं बनाना है. हाँ क्यों क्यों ऐसा मगर क्यों? मुझे एक स्मॉल, क्योंकि अभी लगा था 8 साल से लगातार मैं ट्राई कर रहा था बनाने के लिए. हम्म। और it after a point you get like you start believing that maybe it's not going to happen, maybe it's not destined to happen, maybe I should move on to something else. तो वो आखिरी मोमेंट में मुझे एक 10-15 मिनट का एक विंडो मिला था सैफ के साथ. मैं बोला कि चलो एक लास्ट ट्राई करते हैं, मिलते हैं उससे. एंड आई वेंट एंड मेट हिम, एंड वो 10 मिनट में मैंने उसको स्टोरी बताया और वही 10 मिनट में उसको पसंद आ गया.
और वो 10 minutes में जो थोड़ा window था, we connected, we totally understood what kind of film we wanted to make, and it was perfect. It was like a match made in heaven. So after that थोड़ा आसान हो गया क्योंकि सैफ स्क्रिप्ट पढ़ लिया और एक दिन के बाद उसने बोला कि मैं I'm on board, you know. तो फिर अर्जुन And कैसे with आया? that, so once Saif came on board, we were looking for our parallel lead, and then Arjun's name came up, and it was luckily for me, Arjun is also a very big fan of Saif. He's also been for a long time wanting to work with him. So वो एक plus point था when I met him कि उसको already Saif के साथ काम करना चाहता था. So और जब when मैं और मेरे writer ने उसको कहानी सुनाया, he loved the story. He loved the story about the brothers and the brotherhood and their journey. तो उसके लिए वो सब एक, you know, it fit. The story fit, the co-actor fit, you know, and he was interested in trying new things. So I think we got extremely lucky with Arjun also. पर आपको नहीं लगता कि अभी भी हमारे यहाँ पे ये हॉरर कॉमेडी का जोनर है, ये बहुत काम हो सकता है, इसमें बहुत बड़ा काम हो सकता है, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या रीजन कर रहा है? अभी I think होगा as it goes कि see the one of the main things ये horror का जो है, I think वो है VFX का खेल, sound का खेल, and ये सब अभी it's getting better with every year. We're getting better and better in those departments, and soon enough, and now like you're seeing now, you know, bigger actors are also acting in horror comedies. तो budgets भी मिलेंगे, time भी मिलेगा, correct तरीके से बना सकते हैं picture, and then within the next, I feel अभी as the next few horror comedies जो आएंगे, you will see कि each one is getting better and better and better, and hopefully, you know, it will be a lucrative. तो इंडिया के सबसे बेस्ट हॉरर कॉमेडी में कौन कौन सी फिल्में आती हैं? एक तो आपको स्त्री लगती होगी 100%. हाँ जरूर, स्त्री है. Then you know, back in the day प्रियादर्शन की एक पिक्चर थी वो भूल भुलैया, वो भी in my head I think is a horror comedy which is very enjoyable. और क्या था? अभी के लिए यही दो, और एक पुरानी सी एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थी वो भूत बंगला, मुझे वो भी पसंद था. वो you know, महमूद साहब की. हाँ मैं भी समझता. तो आर डी बर्मन का म्यूजिक था और वो दिखे भी थे उसमें. आर डी बर्मन दिखे भी थे उसमें. हाँ some great music, and हाँ तो है ऐसे 2-3. बट ऑफ लेट अभी कुछ आया नहीं, होपफुली कुछ आएंगे अभी. अभी कौन कौन सी फिल्में देखी 2021 में? ऑफ कोर्स आपकी फिल्म आ रही है तो आप थोड़े बिजी होंगे, लेकिन फिर भी कोई फिल्में देखी जो फिल्म बहुत अच्छी लगी, जिसका डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा, कोई सीन बहुत अच्छा लगा? मैंने क्वाइट ज्यादा नहीं देखी क्योंकि वो as you were saying I was busy. मैंने संदीप पिंकी देखी थी, दिवाकर बनर्जी की पिक्चर. संदीप फरार में क्या चीजें लगी आपको? एक तो अर्जुन की परफॉर्मेंस, परिणीति की परफॉर्मेंस, वो मुझे एक सटल नाइस ड्रामा थ्रिलर का जो एक वाइब था, was lovely. I really enjoyed it. और क्या था? What else was there? I enjoyed I enjoyed Mimi a little bit. You know, I saw Mimi recently. I thought it was a very sweet movie. A.R. Rahman's background score was lovely. The music was lovely. Kriti Sanon was lovely. So it was a sweet story, and her performance was nice. So I enjoyed that as well. Anything else I've seen that I can remember? तो इस साल का अगर मैं बोलूं, इस साल का प्रॉमिसिंग एक्टर आपको कौन लगा हीरो में? हीरो में अभी मैंने Pratik Gandhi. So if you ask me, Pratik Gandhi for me in the recent time has been the most promising actor to come out of our industry. वो Scam 92 एक बहुत ही बढ़िया series है, one of the best series to come out. So I really enjoyed that. So I think Pratik Gandhi. Promising actress की बात करें तो? Promising actress. I mean
one person who I think is getting better with each movie is Kriti Sanon. I think she's getting really every movie she starts, like, you see a new shade to her. So I really think she's very promising. But I also like that girl from Scam 92, Shreya, पता नहीं last name थोड़ा, वो भी बहुत ही अच्छी actress है. But I think Kriti Sanon is really becoming one of the top best actresses in our country. डायरेक्शन की बात करो तो बेस्ट डायरेक्टर कौन लगा आपको पूरे साल का? इस साल का I guess in the series में तो I guess मुझे वो जो Family Man 2 का series था, I really liked Raj and DK's direction. I was a big fan of that work. I enjoyed that series also. The Samantha Akineni is also a brilliant actress. I mean, she was a great performance. So, yeah. राजन डीके की क्या खास बात है? क्योंकि उन्होंने उसके पहले ही फिल्में बनाई है, जो फिल्म बनाई थी, बहुत ही कमाल के राइटर तो खैर हैं ही हैं वो लोग. तो क्या कहना चाहेंगे राजन डीके के बारे में? I think they've got the right sensibility of being local and global at the same time. So they kind of there is a they can root their stories in our syntax, but also they also have a certain global outlook at telling a story. So I feel that gives them an edge, from other filmmakers, I think. क्या बात है. राजन डीके के बारे में बात की हम लोगों ने, हीरोइन के बारे में बात की. अगर म्यूजिक की बात करूं तो आपका फेवरेट कौन सा एल्बम कमाल का लगा इस साल में? इस साल का म्यूजिक में कुछ ज्यादा तो सुनी नहीं, but I've been listening to a lot of there's one artist that I liked. His name is again, I think he composed the main track for Scam 92. उसका नाम तो थोड़ा पता नहीं. I was listening to his other albums that he does outside the movie work. I really like him. I forget what his name is. But besides him, I mean, I haven't really listened to too much music, to be honest, of late, Okay. तो पूरे फिल्म इंडस्ट्री में इस बार सबसे प्रॉमिसिंग कौन लगा? डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, जो लगा कि यार ये चीज कमाल हो गई पूरी इंडस्ट्री में, इस बार की घटना बड़ी कमाल की थी. कौन सी घटना थी इस साल की? I think it's been a tough year for us in the movies, but I guess most of the great work has happened in the series front. Movies to ab nikal ke aa rahi hai, in terms of, for the last year there was no movies only. So for me, I think the series work, I think the stuff that shines is Family Man 2, Mumbai Diaries, and Scam 92. These were the three things that I thought were quite novel. But yeah, I think those are the things that I think shine. आपको कौन सा डायरेक्टर है जो बहुत इंस्पायर करता है और क्यों? Indian director? Yeah. Indian director में I mean, I used to be very inspired. I mean, I still am inspired by I mean, obviously off late his movies are not done too well. Magar Ram Gopal Verma, I have always been a big fan of him. I think he was वो एक director था जो उसका he could do any genre, from Rangila to Bhoot to Company. He was so versatile. He is still versatile. So I still think he's one of the finer directors we've had. But in recent time, I'm not really there's nothing I mean, I appreciate work, but I'm not inspired by the work. So I'm still inspired by Ramu's work or Shikhar क्या खास बात है रामू की कौन फिल्मों में? क्या खास बात ऐसी लगती है कि यार वाकई कमाल डायरेक्टर है यार, मान गया इस सीन को लेकर, इस गाने को लेकर, इस कहानी को लेकर? उसका एक वर्सेटाइल था. वो he could do एक कोई भी एक जॉनर को पकड़ के उसका एक ट्रेडमार्क जो स्टाइल था शूटिंग का, जो वो सब में you could see it in all the genres. उसका एक स्टैम्प था जो the moment you saw a Ramu movie, कि ये रामू का पिक्चर है, क्योंकि वो जैसे उसने शूट किया था, the performance, the way, the sound design, everything. There was a very particular
Ramu RGV approach to it. पर And, क्या होता है, जैसे इतने बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद ऐसी फिल्में आने लगती हैं, जैसे कि मनोज कुमार भी थे, उसके बाद उन्होंने क्लर्क बनाई, कलयुग की रामायण बनाई, ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर, सुभाष घई साहब को देख लीजिए, रामू को देख लीजिए, तो आपको क्या लगता है कि क्यों डाउनफॉल कैसे आता है, क्या रीजंस क्या हो सकते हैं? I think, sir, after like sub creative, in every creative person, there's a peak and then there's a fall after that. So you peak. So I guess after, I mean, like, you know, there's a point when we peak the most, and in that period, you know, we put out our greatest work, and then, like any other, you know, person, then there's a decline. And I guess sometimes it's good to know when you're declining, and is to obviously, you know, throw in the towel and say, okay, I quit, rather than decline and make bad movies and then, you know, it ruin your reputation. पर So वो I think there is a sorry. पर डायरेक्टर को मालूम नहीं रहता यार कि मेरी अगली फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, उसके बाद लगता है फिर एक और बनाओ, जुआ है ये तो क्या है कि बैट पे बैट लगाते जाते हैं। वही तो, मगर I think somewhere you know ना, somewhere deep down when you're making a bad movie, I think if you've made enough movies over the years, you can look at the product and say somewhere you know कि this is not working. And obviously you read reviews, you see people talk about your movies, and you know, okay, chalo, I made one bad movie, two bad movie, four, but if I made a list of bad movies I'm making, then kuch to problem hai. What happens also कि एक और चीज होता है कि when a director hits so much success and he becomes famous and he becomes renowned, what happens that his circle, he surrounds himself with people who only admire him, who only respect him. तो उसको एक critical, he doesn't get any critique. There's no one who questions his authority. There's no one who questions, sir, ये गलत हो रहा है, sir, try this, sir, try that. Everything is yes, sir, yes, sir. तो आप कैसे मैनेज करेंगे? Sir, I am still sir, young, and I'm still trying to find my voice. अब तक, I mean, I haven't. मेरा तो, sir, I'm just in the beginning of my process. So I have no one around me. But no, I think the idea is to be humble and be humble towards the craft and listen to as many people as you possibly can. You know, take everyone's advice, take everyone's critique, and then decide what you want to. तो आपने जो इस बार फिल्म देखी, जो सीरीज देखी, उसमें कोई एक क्वेश्चन अगर आपके जहन में है, किसी डायरेक्टर से पूछना चाहते हैं, किसी एक्टर से पूछना चाहते हैं, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ऐसा तो कोई सीन नहीं था सर। I mean, I think overall, you know, you enjoyed more than anything. The only question that I can ask to people who make successful long form web series is here, how do you do it? How do you hold on to the tonality for so long? कि movie में 2 घंटे का picture है, and that takes you to hold on to 2 hours of a film is so difficult, but to hold on for 10 hours, 8 hours को audience को पकड़ के रखना, वो एक, you know, एक नेक्स्ट लेवल का एक क्राफ्ट है। तो सीरीज तो आप सीरीज का बाप किसे मानते हैं कि यार ये सीरीज में बाप आदमी है, मानना पड़ेगा इंडिया में? अभी बहुत यंग है ये स्पेस। सो अभी लाइक ओनली आफ्टर से सपोज 2-3 शोज आएंगे एक क्रिएटर के साथ, तो आई कैन से कि ये दिस वन इज द फादर ऑफ, बट राइट नाउ द फ्रंट रनर्स इन दिस स्पेस, लाइक आई वाज सेइंग, इज यू नो पीपल हु आर churning out good web shows are, you know, Raj and DK and are currently the only ones that are churning out good, you know, consecutively. उनका जो shows निकल के आ रहे हैं वो अच्छे हैं. So I would think that they are currently the front runners in our web world. तो आपको क्या लग रहा है कि 2022 की कौन-कौन सी फिल्में चलेंगी और किसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं 2022 में? I am excited to see. I mean, I'm looking forward to see 83. I'm hoping that 83 will be a fun film. I'm looking forward to see in the next. I'm looking forward to see Bhedia, that will come out with a Varun Dhawan. I'm really curious and excited to know कि उन्होंने क्या किया है. So वो मेरा एक excitement है. And yeah. क्या बात है. And best of luck for your future. बहुत शुक्रिया हमारे साथ में रहे आप. Thank you.